we are going to study another one-dimensional quantum mechanical problem, which is much more realistic actually than what we studied previously. So in the last week we considered a one-dimensional quantum well, and the reason was this, that a lot of problems where particles are confined can be approximated by one-dimensional quantum well. And that also we considered an infinite dimensional, infinite quantum well, where the difference of potential inside and outside is infinite. So that was quite an approximation. But today we will actually discuss what we call a quantum harmonic oscillator. And this is the generalization of harmonic oscillator that you already studied in your classical mechanics. So you can represent it using this thing, that let's say we have a mass M attached to a spring K, and this, let's say, is x-axis. So एक तो इसको देखने का ये तरीका है कि आप अपने ज़हन में यही इमेज ले आए कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ मास m अटैच्ड है. The problem is valid for that image as well. लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है फिजिक्स में वो इससे ज़्यादा है. ना सिर्फ ये कि एक एक्चुअल स्प्रिंग को अगर हम मास से अटैच करें तो ऐसे बिहेव करता है, बल्कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम है they are roughly like that. Whenever you have something which oscillates around an equilibrium position, that can be modeled with this problem. For example, a pendulum, उसमें अगर से there is no spring, but that also oscillates around a central point. इसके अलावा, let's say you clamp some elastic rod like this, and you touch it like this, it starts oscillating. This can also be modeled exactly like this. Similarly, और भी बहुत सारे problems हैं जिनमें whenever you have a particle in a stable equilibrium and you disturb it and it starts oscillating, all of those problems can be modeled using this harmonic oscillator. Of course, the assumption is this, that the amplitude of vibration is not large enough to break the harmonic approximation. हम जो इस कोर्स में ये टॉपिक कर रहे हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिवेशन, and that is that I want to explain how molecules work, how molecules interact with light, and why do we see special spectrums associated with molecules, and how do we identify different types of molecules, and what are the effect of light on molecules, and what does molecule emit in return. And because that's very important in a lot of disciplines to be able to probe different molecules. Because molecules can also be thought of as like spring mass system. There are, for example, अगर hydrogen को imagine करें, two hydrogen atoms attached by a bond. So whenever there is some energy which is oscillating that molecule, those atoms, they vibrate, and they actually vibrate all the time, we'll see. So not only that simple molecules, but even complicated molecules, they can always be thought of as complicated spring mass systems. और उन सब की base जो है, it is this, a single mass attached with a spring to a rigid spoke. So we will begin from here, and we will be able to explain these complicated molecular interaction with light as well. So let's begin here. It's this job जैसे mechanics में करते रहे, you have been starting with this equation and then solving Newton's second law and finding its motion as a function of time. But instead of doing this, we will be working through the potential, and the potential associated with this force is half kx squared, as you can verify. अगर आप इसका negative derivative ले with respect to x, तो ये आ जाएगा, right? So if I show schematically, so this force is
can be represented like this. So this is a negative slope minus kx, and this function, which is whose derivative is this, is a parabola like this. So whenever you have a potential like this and there's a particle inside this potential, so you can imagine this as if it is going as a gravitational mass is going in a valley, so it starts oscillating like this. ज़ाहिर है physically वैसे नहीं होता, it depend करता है कि physical situation क्या है, but the particle goes like this. So whenever you have a potential profile like this, you can solve it for small vibration using this potential. और जिस तरह से I'm not sure if you have understood this before or not. If we have two atoms with, let's say, two masses, उनके दरमियान जो potential अगर आप देखें, so it has a value like this. क्यों? क्योंकि ये दो atoms के दरमियान interaction किस तरह से होता है? जब ये बहुत दूर है, तो there is almost no force between them. आप अगर let's say दोनों को hydrogen atom में imagine कर लें, इसका proton, इसका electron neutral, so two neutral objects are not attracting or repelling each other. लेकिन जो ही आप इनको करीब लाते हैं, तो जो इनका internal structure है, it starts acting on each other. कि ये proton इस electron को थोड़ा सा attract कर रहा है, ये proton इस electron को attract कर रहा है, and there can be a bond. But if you push them further, you take the other atom here, then the repulsion takes over. So the force is something like this, that when they are very near to each other, there is a repulsive force. When they are far away, there is almost nothing. And at a certain point, there is an equilibrium. So इसका जो potential है, usually it's like this. So this, इसका देखिए, the slope here is negative. So negative slope means the force is positive, repulsive. The slope here is positive. So positive slope means क्योंकि force जो है वो u के derivative के proportional है, okay, and with a minus sign. So positive slope means positive derivative. Negative sign से convention से खुद हमने multiply करना है, because we define u like this. So negative force means attractive. So this is an equilibrium point. और equilibrium point के हम देखें, तो ये जो equilibrium distance है, अगर यहाँ पे आप इसको थोड़ी सी energy दें, it will start oscillating like this, just like a spring mass system. And similarly, you can add more atoms and come up with this potential. So in this potential, we are going to solve our quantum mechanical problem, and the idea is to see how do we quantum mechanically understand this problem, and जिसकी base पे we will be able to see how light interaction is. जी? हाँ. ये वाला स्लोप नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव स्लोप हो तो डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस आ जाएगा, एंड प्लस रिप्रेजेंट्स अ फोर्स व्हिच इज रिपल्सिव. Okay, so how do we solve a quantum mechanical problem? We have Schrodinger equation to solve, minus h cut square 2m b square psi dx square plus ux psi x e psi x. अच्छा, ये प्रॉब्लम पहले वाले प्रॉब्लम इससे भी बेहतर है कि जो हमने वेल वाला प्रॉब्लम किया था, यूजुअली वी डोंट हैव वन डायमेंशनल वेल्स in our practical situations. We approximate three-dimensional wells by one-dimensional well. लेकिन ज़्यादातर जैसे diatomic molecules हैं, all of them are one-dimensional quantum mechanical oscillators. So this very highly accurately approximates this situation. और even जो multi-atoms हैं, they can be broken down into individual one-dimensional oscillators. Of course, there are modes in which it's more than that, but whenever we have two atoms, the bond between them can be modeled with a spring, and their vibration can be modeled with one-dimensional quantum oscillator. अब इसको solve करने का तरीका जो है वही है, या ये हमारे पास जो effects है, इसको हम इसमें substitute करेंगे,
and we can attempt to find its solution. पहले जो प्रॉब्लम हमने किया था उसमें u जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था, तो हमने हर डिफरेंट रीजन में इसको अलग से सॉल्व करके देन जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी थी वहाँ पे स्मूथनेस कंडीशन अप्लाई की थी. लेकिन अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, we don't have to do that. I'm just going to plug in this potential function here and we get this equation. And you are so lucky that you don't know too much mathematics that we won't be able to solve this equation in general. Okay? So I can't attempt solving this differential equation which has variable coefficients attached to it in general here. The way to solving these equations, which you will learn much later, is a series solution. You assume a series representation for the unknown side. You substitute the series in here, then you take derivative and match equivalent terms, and then you come up with a solution. We are not going to do that. You don't have to worry about that. It's just a series with unknown coefficients. Psi of x is equal to a plus bx plus cx square plus dx cube and so on. So you have all those unknown coefficients. You find them by making sure that they satisfy this. But we are not going to do that. This course may, all I'm going to do is just going to motivate a couple of solutions of this problem, and then we'll have to live with that. Okay, so इसके लिए let me just propose a solution and we'll substitute it here and we'll see if it is a solution or not, and we will also try to find the energy of the particle and other things. And the first proposed solution is, I know that कुछ लोगों के लिए this is not satisfactory, which is a good sign, because it's just a guess which I am telling you beforehand instead of finding a solution of the differential equation. So people have found these solutions, and the simplest solution that they have found of this equation is of this type, where there is a constant here and a constant here. So let's try to find these two constants. Now before I do that, let me do one more thing. ये जो constant k है ना, spring constant, बाज़ औकात इसको ऐसे ही लेके हम चलते हैं, but most of the time we define this constant in terms of another constant, which is the natural frequency of the oscillator and the mass of that thing that is attached. So if I put this k here, this equation becomes minus h squared to m b squared psi bx squared plus half m omega naught squared psi of x e. So you can solve the equation just like this, or you can solve it like this. Yes, there is a square. So thank you. Let me put a square here. Omega naught square x. अब इसमें दो कांस्टेंट हैं, उनको फाइंड करने के लिए let me substitute this equation here and require that this is a solution. तो अगर इसमें इसका solution होना तो क्या होना चाहिए? Right hand side should be equal to left hand side, and by matching those sides we can find the values of these constants. So let's put psi in here. उसके लिए पहले मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर देता हूँ. d psi by dx is minus alpha a minus alpha x square, और तब इसका हमें चाहिए डेरिवेटिव. So let's do it here. जो एक्सपेंशन फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव वही होता है into the derivative of the power. So इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 minus 2 alpha a x minus alpha x square. अब हम इसका दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं. अब ये जो minus 2 alpha a है ये तो कांस्टेंट है. x और एक्सपेंशन का डेरिवेटिव लेना, तो इसको चेन रूल से करेंगे. पहले x का ले लें डेरिवेटिव 1 और एक्सपोनेंशियल वैसे ही आ गया. फिर x को वैसे ही रख लें और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल
into इसका derivative which is minus 2 alpha x. So chain rule से ये minus 2 alpha a constant है, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पहले इसका लिया और ये वैसे का वैसा, फिर ये वैसे का वैसा और इसका डेरिवेटिव। लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड किए हुए हैं and they know that this is solution and I note. Okay, so this is a good question. Okay, and मैंने पहले भी इसका बताया कि in general जो इस तरह की differential equation है, when you have to find its solution, what you do, you assume a series solution of psi. You assume psi to be like this. Let psi is some a, bx, cx square, dx cube, and so on, and then we have to put exponential terms and other things. You put them there, and then you work out a solution. So that's too advanced for us. We are not going to do that. So the solutions are called Harmonic polynomials, and this is the simplest of those polynomials. Okay. Okay. So this is minus 2 alpha a. ये उससे मल्टीप्लाई कर जाएगा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर a x स्क्वायर माइनस so just to get your attention, इसी तरह का solution मैं आपको होमवर्क में दूंगा, which you will verify by substituting and finding the constants, और फिर जो तीसरा solution होगा वो आपको एग्जाम में दूंगा, जो आपने इसी तरह से करना होगा. Okay? So let's substitute this d square psi, it has infinite solutions. Okay? So let's substitute this one in this differential equation, and we also put psi in other parts, so we get minus a is an unknown constant. So d square psi by dx square की ये वैल्यू आ जाएगी minus 2 alpha a minus alpha x square plus 4 alpha a x square minus alpha x square plus half m omega naught square x square, और psi की जगह पे आ जाएगा a exponential minus alpha x square, and then e, और psi की जगह पे क्या आ जाएगा a exponential minus alpha x square. So I just took the second derivative of the यहाँ पे ये x आया हो, हाँ, कहाँ पे ये वाला, हाँ जी, चलो, थैंक यू. अब इसमें देखें हमारे पास टर्म जो आ रही है, उसमें मैं इस तरह करता हूं कि x स्क्वायर वाले टर्म्स अलग कर लेता हूं और बगैर x के टर्म्स हम अलग कर लेते हैं. बगैर x वाली टर्म, और दूसरी चीज एक और भी हमें नजर आ रही है, a into e power minus alpha x square. This is common in every term, so we can simply stock it out. So we are left with minus h cut square over 2m minus 2 alpha plus 4 alpha square x square plus half m omega naught square x square is equal to e. मजीद इसमें e को इस तरफ ले आते हैं, ये बल्कि ऐसे रहने दें, a alpha square, ये a into ये exponential term, this is common in every term. a into यहाँ भी है, a यहाँ भी है, यहाँ भी है, so we can take it common and cancel it. जी जी, ये प्लस कैसे आ गए? कौन सा प्लस? ये 1 कहां से आया? x का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है, थैंक यू. सो यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देते, आ गया
ये माइनस माइनस प्लस एच का स्क्वायर अल्फा ओवर एम, ये 2 से कैंसिल हो गया। फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एच का स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर ओवर एम एक्स स्क्वायर प्लस हाफ। Okay, so if this equation has to be satisfied, there is only one possibility, and that is that this constant should be equal to this constant, okay, and the sum of this term, these two terms should add up to 0. So it means that we have E equal h का square alpha over m। ये देखिए, अब ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई हो सकती है? एक तो ये कि ये टर्म e के बराबर हो, ये कांस्टेंट नंबर है, वो भी कांस्टेंट है। अब ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 होना चाहिए, तभी 0 is equal to 0 होगा। So which means that -2 this should be equal to half m। अब इसको यहाँ पे देख लें, आप अगर ज्यादा शायद आसानी से समझे। लेट्स से वी हैव 2 प्लस a x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू b। अब ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो सकती है? if 2 is equal to b and a is equal to -3 is equal to -3, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए ना। तो वही मैंने किया कि द कांस्टेंट, क्योंकि वो इक्वल टू उधर, अगर ये कांस्टेंट इधर होता तो फिर ये इसके भी माइनस के बराबर आ रहा। अब यहां से देखें, एक तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा इज, ये m उधर ले जाते m स्क्वायर हो गया, ये 2 नीचे आके 4 हो गया, h का स्क्वायर नीचे आ गया तो अल्फा स्क्वायर आ गया m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 4 h का स्क्वायर। और यहां से अल्फा क्या आ गया? अल्फा आ गया m ओमेगा नॉट ओवर 2h का, और उस अल्फा को मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो e क्या आ जाएगा? यहां पे पुट कर दिया अल्फा को, तो m से कैंसिल हो गया, h कट से कैंसिल हो गया, हाफ रह गया और ओमेगा नॉट रह गया और एक h कट रह गया। तो दिस इज हाफ h कट। जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है ना। देखिए, वी आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और सॉल्यूशन कब होता है? व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब यहां पे जब हम आगे लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर है, राइट साइड पे कोई x स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ताकि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो। आप में से शायद कुछ को याद हो, एक होमवर्क में प्रॉब्लम था जिसमें आपने क्वांटम मैकेनिक्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का यूनिक अनसर्टेनिटी रिलेशन निकालना था, द मिनिमम एनर्जी, और वो इतनी थी। So it means that this solution is the minimum energy solution or the ground state solution। और अब हमारे पास जो psi है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? So the first solution is psi of x, let me call it psi naught। a अभी भी unknown है, हमें नहीं मिला अभी तक, so minus alpha x square, alpha की वैल्यू भी we have been able to find is m omega naught over 2h का, and we have been able to find this energy, let's call it E naught, which is half h का omega। बहुत मुश्किल काम है। So this is the first solution। अभी इसमें a unknown है, कोई आप में से बता सकता है a कैसे फाइंड किया जा सकता है? जो एम्पलीट्यूड है, हमने इस सॉल्यूशन में स्मूथनेस कंडीशन कहीं यूज नहीं की। क्यों?
क्योंकि हमारा u जो है ऑलरेडी स्मूथ था, तो साई भी हमने सपोज किया स्मूथ था, लेकिन साई पे एक दूसरी कंडीशन थी, वो अभी तक हमने यूज नहीं की, and that was that psi should be normalized, that the probability of the finding of the particle from minus infinity to infinity should be 1, which means that minus infinity to infinity psi square dx should be 1. इसको यूज करके हम ये a फाइंड कर सकते हैं. Okay, so let's put it here. So this is minus infinity to infinity. A square को बाहर निकाल लेते हैं, constant है. We are left minus 2 alpha x square dx is equal to 1. And I know that you haven't studied integral of this type. So I'm just going to tell you the value of this integral. Or exam may be whenever there is an integral other than sine, which involves other than sine and cosine and x square or x cube, I will always tell you the integral to use. Okay, so you don't have to worry about complicated integration. Sorry, क्या? नहीं, स्क्वायर तो जब भी लेंगे स्क्वायर स्क्वायर ही होगा. यहाँ पे तो आई के एक्स नहीं है, वो हर केस पे डिफरेंट होगा. ठीक है, स्मूथनेस के साइज शुड बी कंटीन्यूअस, साइज शुड बी स्मूथली वेरिएबल. सो यहाँ से ये इंटीग्रल जो है minus infinity, this is actually a Gaussian integral. This is pi over alpha square. So this is 1, which means that a square is alpha over pi, or a is alpha over pi power 1. So हम जो ये कर रहे हैं, actually the value of a isn't important, बल्कि इस कोर्स में all that is important is just this now, that the energy of this ground state is this half h cut omega. So this is one solution. Let me just plot it. So this is, let's say, the value of energy half h cut omega naught, and ये जो solution है इसका ग्राफ किस तरह से होगा? This graph would be something like this, right? Because this is a function which is decaying on both x negative and x positive side. और इसकी probability जो है, which is just the square of this thing, it would be something like this. So this is psi mod square, and this is psi. So this is the graph of the solution side, graph of the wave function. Energy की तो एक number है, h cut omega naught. So this is one solution, and let's now proceed to the next solution. So next solution जो है वो भी I'm just going to tell you. Okay. So the next solution is also complicated to find from the equation for us. So I'm just going to tell you the solution, and all I'm going to do here is going to find the energy corresponding to that solution and the other unknown values. Sorry? A to include नहीं कर रहे हैं, हमने A फाइंड भी किया. नहीं, मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये चीज है कि हमारे लिए जैसे जब हम बोहर एटम भी हमने देखा है, तो जब लाइट मैटर इंटरेक्शन की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी कितनी है. ठीक है, कि उसका वो रेडियस कितना है, दैट्स नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो इस कोर्स में व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी मॉलिक्यूल्स, फॉर अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द दैट सॉल्यूशन. Okay, so this is physical interpretation is just the amplitude of the probability function. Okay, अब इसका जरा ये भी देखें, जो पार्टिकल है लोअर एनर्जी स्टेट में, where it is most likely to be found in the center, क्योंकि सेंटर में साई जो है इट्स हाईएस्ट, और जो आप साइडों पे जाते जाएं जो साई है इट डिक्रीजेस. बाय द वे मिड टर्म से रिलेटेड ही यहाँ पे सवाल है.
What's the order of the uncertainty in energy in this state? Uncertainty in energy 0, because energy of this state is well defined. What's the uncertainty in position for this state? It's of the order of this value, right? Whatever is this. आप compute करने लगे that's separate thing. But this delta x you can find के ये maximum से लेके कब almost 0 का close कर देगा. दूसरी तरफ नहीं देखें ये infinity तो u infinity की जा रहा है ना. wave function क्या है? wave function यहाँ पे maximum है, थोड़ी देर बाद 0 को हो गया. तो इसका मतलब है its probability of finding this particle is highest in the center. Okay, so as you move away it decreases, so it means it's most likely to be found in this region, but we don't know where it is. So this is its uncertainty. Delta x is not 0, delta x is something of this order. It's not 0, but delta E is 0 because its energy is well defined. इसका एवरेज मोमेंटम क्या होगा? नॉट अनसर्टेनिटी, जस्ट एवरेज मोमेंटम क्या होगा? नंबर बताइए. किसी भी क्वांटम और किसी भी ऑसिलेटर का, फॉरगेट क्वांटम ऑसिलेटर, किसी भी ऑसिलेटर का एवरेज मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि ये यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है. एक साल बाद आके भी देखेंगे ये यहीं पे है. इट्स नॉट गॉन हियर और गॉन हियर, सो एवरेज मोमेंटम इज 0. एवरेज पोजीशन क्या होगी? whatever is this point, अगर ये origin आपने 0 लिया हुआ है, so then this is 0. What is the uncertainty in momentum in this state? क्या ये 0 है या non-zero? बस इतना होता. Non-zero, because sometime it's going here, sometime going here, so there is an uncertainty in momentum. क्योंकि ये central position के around ही oscillate कर रहा है. हाँ, क्योंकि कहीं जा नहीं रहा. On the average it's not going anywhere. नहीं, move तो कर रहा है, but वो उसी average के around ही move कर रहा है. It's not going. Average अगर value हो तो थोड़े अभी इधर है, थोड़ी देर बाद इधर आ जाए, लेकिन उधर ही. So it means average momentum is 0, but there is an uncertainty in its momentum. Okay, let's now go to the second solution. So I'm just going to tell you that the solution is of this form. Okay, that there is an x now attached here, and the way to prove that this really is the solution exactly वही है. आप इसका double derivative ले, put it in this equation and match the terms on both sides. I'll give this part in the homework, and then you find the energy. The energy which comes out is 3/2 h का ओमेगा नॉट. अल्फा जो है इसकी वैल्यू वही आ जाती है जो पहले आई है. जो a है इसकी वैल्यू भी पहले से डिफरेंट आती है. I won't give you to find a in homework because it involves complicated integration. But you can find alpha and energy directly from this equation. इसी तरह अगर आप नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें, the third solution, infinite. The third solution, quantum well में कितने solution थे? Recall. Infinite. N is 1, 2, 3, 4, 5. It can go to any value. So we have infinite solution here. So psi of x is some constant. Let's call it 1, 2. This is actually some a plus bx square minus alpha x square, and its energy जब आप फाइंड करेंगे, let me call it 1, 2 is 5/2 h squared omega naught, and so on. जहाँ ये भी constant है which you can find by substituting in the equation. हाँ, इसलिए कि जब आप इसको substitute करेंगे ना, you will get some terms in x, some terms in x square, so you will get more equation. यहाँ पे जैसे हमने किया था
तो सिर्फ x स्क्वायर था और कांस्टेंट थे, दो इक्वेशन आ गई। As you go to the higher number of solution, you get more powers in x, so the number of equations increase from the same equation. Okay, so let me now just summarize it. So this is the U for this oscillator. So the ground state solution is of this type. ये जो solution है इसका प्लॉट किस तरह से है, देखें इसकी शक्ल तो ऐसे ही है, ये जो x है ये किस तरह से होता है, ये u होता है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, यहाँ पे नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है। तो इसका ओवरऑल जो प्लॉट है वो किस तरह से होगा, इट वुड बी समथिंग लाइक, अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लें, इट गोज नेगेटिव, goes to 0 at x is equal to 0, क्योंकि x 0 पे ये पार्ट 0 हो जाएगा and then becomes positive and then decreases. So this is the zeroth solution, this is the first solution, और इसी तरह जो next solution है इसको अगर देखें, so this is actually so solution जो है क्या डिस्क्राइब करते हैं, इसका अगर आप सिर्फ देखें तो पहले तो इस पे अगर ये x के तरफ से करूं, पहली बात ये, do you agree that it has a plot like this? You can see क्योंकि x 0 पे तो 0 ही होना, जब x पॉजिटिव में इंक्रीज होगा इसकी वजह से इनिशियली there is a strong increase, but after a while because of this factor it will begin to decrease. इसी तरह लेफ्ट साइड पे होगा, लेकिन x नेगेटिव पे ये टर्म नेगेटिव लगेगी। अब सवाल ये है कि ये बता क्या है, ठीक है, इस स्टेट में एनर्जी जितनी होगी, बता ये रहा है कि इस स्टेट में जब पार्टिकल होगा तो उसकी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इट्स हायर हियर एंड हियर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, इट्स द स्क्वायर ऑफ दिस वेव फंक्शन, द स्क्वायर इज, सो दिस इज द साइन मॉड स्क्वायर, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इसका मतलब है एक ऐसा ऑसिलेटर जो ग्राउंड स्टेट से एक लेवल अप है, सेकंड वेव फंक्शन है में है, सेकंड स्टेट में है, then it's highly likely to be found here and here, but not in the center. Similarly, ये जो है ये यूं करके है, और अगर इसकी probability density हम देखें, so it's something like this, that it is more likely to be found here, here, and here, but not in between, and so on. और एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है h कट हाफ h कट ओमेगा, इसकी है 3/2, इसकी 5/2 एंड सो ऑन। तो यहां से यहां तक डिफरेंस कितना हुआ, इन दो स्टेट में एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ, दिस माइनस दैट इज h कट ओमेगा, राइट। इसमें से आप जो इसकी एनर्जी है ये माइनस कर दें, और यहां से यहां तक एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, 3/2 से 5/2 तक, another h cut by omega naught. Similarly जो आप गैस कर सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो भी ऐसे ही चलती जाएगी। तो इसका मतलब है कि फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर द एनर्जी लेवल्स आर डिफाइंड बाय दिस रिलेशन, that in each level the energy is given by this. In the ground state when n is 0, the energy is half h cut omega naught. In the next level energy is 3/2 h cut omega naught, then 5/2 h cut omega naught, and so on. Energy का कोई plot नहीं, energy just a value for the particle in that state, wherever the particle is. Straight line कहाँ पे बनाई? So this is just a number, okay? So straight line कौन सी? So because it's a well-defined value of energy. हाँ, इस जो stationary state है, so this is a good question. So for all stationary states, the energy is well-defined and there is no ambiguity in energy. Okay? और ये जो confusion है कि where will be the particle? Okay? So particle जो है उसके होने की probability size से गिनती जाती है। आप imagine करें एक लेट से स्प्रिंग मैस सिस्टम, जो उसकी ग्राउंड स्टेट है उसमें
वो उसकी एनर्जी है हाफ एच का ओमेगा नॉट, और उस एनर्जी से ये ऑसिलेट करता जा रहा है। क्लासिकली अगर आप उसको देखें तो यू कैन एक्चुअली सी इट्स मोशन, दैट द पार्टिकल इज हियर देन हियर देन हियर देन हियर देन कमिंग बैक. Quantum mechanically it's in a black box. You don't know where the particle is, but you do know its wave function psi, which tells you that if you make a measurement, you are most likely to find it in the middle, and you are less likely to find it at the extremes. आप उसको कोई फोटोन दें जिसकी एनर्जी अपनी है h का ओमेगा नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखें that this thing works in exactly the same way. इसकी एनर्जी हाफ का ये है, इसकी ये है. तो ये हम वही तो कर रहे हैं. So we are studying quantum harmonic oscillator. हाँ, क्वांटम वेल और इसमें जो फर्क है, पहली बात ये कि उसमें एनर्जी लेवल्स डिफरेंट थे. इन क्वांटम वेल the energy levels were h square over 8 ml square. So ये देखें एनर्जी डिफरेंट है. यहाँ पे जितनी पहली बात है कि डिफरेंस भी ज्यादा था. जितना डिफरेंस यहाँ पे था उससे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे था. जी यहाँ पे एक तो ये कि हर लेवल की एनर्जी डिफरेंट है, प्लस जो गैप है यहाँ पे सबका कांस्टेंट है. जो एक सिमिलरिटी भी है. सिमिलरिटी कौन सी है कि रफली अगर आप देखें ना तो वेव फंक्शन ऑलमोस्ट एक जैसे लग रहे हैं. एग्जैक्टली तो नहीं है, बट रफली दे आर सिमिलर. एंड एक्चुअली दिस थिंग is very common through all the quantum mechanical system. The ground state wave function is always very nice, symmetric, without any zero through it. Just like s orbital in atoms, it's a spherically symmetric probability function जो हम बाद में देखेंगे. Similarly, दोनों का ground function ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है और जो ये है इसका ये इस तरह से. इसका जो सेकंड है वो यूं था, ठीक है, या यूं बना लेने से. So उसका भी roughly वैसे है, not exactly but roughly. So there is this type of similarity, but there are differences. और एक common similarity सब में है. There are discrete energy levels, and they interact with external electromagnetic field or electromagnetic waves or a photon, whatever you want to call it, in exactly the same way. If a particle is in this state and you want to take it to the higher level, you have to supply a photon which has an energy equal to this gap. If a molecule is oscillating in ground state with this energy and you want to take it from here to here, you have to supply a photon with this energy, and the molecule goes from here to here. And if the molecule is here, it can radiate that photon and come back here. Similarly, if a molecule is in this state, it can go here by absorbing a photon, and it can go from here to here by emitting a photon. फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हो सकते हैं उनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर हो, 500 नैनोमीटर हो, क्योंकि वो डिपेंड करती है इस एनर्जी गैप पे. यहाँ पे जो फोटॉन है यूजुअली मॉलिक्यूल्स में दे हैव अ वेवलेंथ ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर, क्योंकि ये एनर्जी गैप काफी कम होता है. फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल that we can understand how different systems work. The second, which is more practical reason, and that's why we are actually studying in this course, is that if suppose you have an unknown sample and you want to see what type of atoms are in it. आप अगर उनका वो atomic spectra observe करें, तो by measuring the wavelength of light, you can find out what are the energy level. और आपके पास एक कंप्यूटर में डेटा स्टोर है, you can check कि ये एनर्जी लेवल के एटम क्या होते हैं. अगर मॉलिक्यूल आपने डिस्टिंग्विश करना है, आप कोई मॉलिक्यूल देखना चाहते हैं, सिमिलरली यू वर्क इन दिस वेवलेंथ रेंज एंड यू फाइंड आउट व्हाट आर द एनर्जी डिफरेंसेस एंड यू कैन फाइंड आउट व्हाट मॉलिक्यूल इट इज. हाँ, ओके, बिल्कुल है. सो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस सेंस में भी एप्लीकेबल है कि देखिए ये जो मॉलिक्यूल है, it cannot be frozen. You cannot freeze all the motion in the molecule because the lowest possible energy is half h का omega naught. हाँ, because it's a stationary state. It's going to be here for all time.
नहीं, टाइम की जो है वो अनसर्टेनिटी जीरो नहीं है, उसको आप इस सेंस पे देखिए that the particle exists for all time. So it means delta t is actually infinite. Okay? So here delta x and delta p, they are both finite and related. ये free particle नहीं, these are bound particles. Molecule, a quantum oscillator, particle in a well, they are all bound particles. So I'm going to reduce the number of questions and want to do one example here. So let's do an example. The example is that of hydrogen gas. Okay. So I want to show you that why hydrogen gas and almost all gases, they deviate from ideal gas law, and in what sense they deviate. 1850s में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कैल्विन. He discovered an amazing property of lot of gases, especially वो gases जिनकी density कम. He saw that as the temperature is decreased, the volume decreases. As the temperature increases, the volume increases. So this thing has been known to people anecdotally for a long time. But he characterized this thing and he came up with this thing. That if you take a lot of different gases and you plot their volume versus temperature, so you do only in a range where you can do, and in those times you can only do around from 0 to let's say 100 degrees centigrade, a temperature around that. So you take different gases and he saw that all of them, if they are extrapolated, so this is one gas, this is second gas, they seem to go to the same point, minus 273.15 degrees Celsius. He called it an absolute zero. The reason he gave was this, that, and that's how the ideal gas theory emerged, that gas can be thought of as small particles. People didn't know about molecules or atoms, the difference between them. They were all thought to be as point particles. And you can imagine a gas like just small balls, a lot of them going around. And when you keep them, all you do is increase their energy, kinetic energy. So they move with the more rapid motion so that their volume increases. And when their temperature is decreased, it's as if you take out the kinetic energy, so their motions get smaller and their volume decreases. So he hypothesized that if you keep on doing this, you should reach a point where all of the motion ceases to exist, and of course you won't get to zero volume because all of them, they will condense to some volume, but the pressure will go to zero. So pressure and volume, they are both being proportional to temperature. And that is because all motion ceases to exist, you reach that absolute zero temperature. We know that that's impossible. Because when you reduce temperature, you can eliminate all types of motions, but there are some motions that have a minimum because of uncertainty principle. And since we know that molecules have a structure, and the structure is like they are harmonic oscillators, and quantum mechanics tells us that the harmonic oscillator has a minimum energy. So that's why in the labs on Earth we have been able to go to 1 part to a billion next to zero, but have not been able to reach absolute zero temperature for materials. Because you cannot freeze all the motions. And that's where the uncertainty principle is also playing a role. So this was one contribution. The other contribution was in the prediction of heat capacities of gases. Heat capacity is that how much heat you have to give to a gas to raise its temperature by 1 degree centigrade. So it was supposed to be constant for all gases. Okay? So because all gases are thought to be made of point particles, and then the same thing should happen. You give a certain amount of energy, the volume, the temperature should increase. So initially, in those times, when people were
working only in limited ranges of temperature, they saw that that's the case. For example, if you take hydrogen gas versus temperature, you find the heat capacity at constant volume, you see that it's constant. And it seemed to agree with experiments, but later on, when people were able to work at a higher temperature very quickly, they saw that at some temperatures there are certain jumps, and then again the heat capacity is constant, and then at a certain temperature again there is a certain jump, and then there is a constant heat capacity. So why are there certain jumps? That is explained by the internal structure of molecules, and let's do that here. And to do that, let me take the example of simplest gas, which is the hydrogen gas. So hydrogen gas has 2 atoms of hydrogen. Now this is a problem which is more complicated than the original problem which we have attempted here. There we have taken only one mass attached with a spring to a rigid place. Here we have 2 masses and they are both moving freely, though there is only one spring. Fortunately, we can reduce this problem to exactly the same problem, not only in quantum mechanics but also in classical mechanics, if we go from our general coordinate system to a coordinate system which has its origin at the center of mass. अगर आप इसको imagine करें, तो बजाय इसके कि आप इसकी पोजीशन x1, इसकी पोजीशन x2, उनको ट्रेस करें, what you can do, you can take your origin at the center of mass, and then you look at the system. It is as if this mass is, there is only one mass, like this mass which is oscillating attached to a spring at the center of mass. But when you go to the center of mass, the mass is not the full mass m, but it's what is called effective mass m. And this is given by this. So if both masses are equal, this is nothing but half mass. So instead of solving this problem of 2 masses attached with one spring, you can solve the problem of one mass if you take the mass to be half of this mass. So this is the mass experienced by the center of mass. So let's do that, and the example is like this, that for the hydrogen atom, we are given that its mass is 1 unit, that it's equal to 1 hydrogen, 1 proton. So इसका मतलब है कि जो effective mass है, this is half that of a proton, और अगर और इसका जो spring constant है, it's given as 573 Newton meter, which can be used. So K is 573 Newton per meter, and if I use this K, I can compute this natural frequency K over m, which is 8.28 10 power 14 रेडियन पर सेकंड. अच्छा, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, मॉडर्न किताबें देती हैं वहाँ पे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से काम करते हैं, which is रेडियन पर सेकंड. अगर आप थोड़ी ओल्डर टेक्स्ट बुक देखें तो दे ऑल वर्क इन साइकिल्स पर सेकंड. तो आप रेडियन से साइकिल में जा सकते हैं इफ यू डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है, और साइकिल से आप रेडियन में आ सकते हैं इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय 2 पाई. सो दिस इज इन रेडियन पर सेकंड इन एसआई यूनिट. सो दिस इज ओमेगा नॉट. What's the difference of energy levels? So what is this level? This difference is h cut omega naught 6.6 10 power minus 34 into 8.28 10 power minus plus 14. So this is in joules is 8.74 10 power minus 20. K spring constant. So this is the energy difference between 2 levels for hydrogen gas. Okay, so let's keep this thing in mind, and
we evaluate another information. So we can transform the problem into center of mass system, not only for spring but for other things as well. For example, हमने जो बोहर मॉडल सॉल्व किया था, we assume nucleus to be at rest, at fixed somewhere, and we only took the electron to be moving. But and then if we have two particles which have almost similar masses, we have to consider the other particle as well. So बजाय इसके कि problem of solve करें जिसपे दो particle लें, you can convert it into a problem of single particle, but with a mass which is given by this thing, which is reduced mass. Essentially, it goes to the center of mass frame. जी. Thank you. This is 1.05 something. हाँ. Okay. जो ऑसिलेटर है उसमें फॉर्चुनेटली तमाम लेवल्स के दरमियान में सेम डिफरेंस है। दैट इज हाइड्रोजन एटम, अगर आप उसको रेफर कर रही हैं तो दिस इज नॉट हाइड्रोजन एटम। सो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है दैट्स अ सेपरेट थिंग, दिस इज द एनर्जी गैप रेफर टू द बॉन्ड बिटवीन देम। ठीक है, सो इनका ये कह रही थी कि आप ये एनर्जी लेवल जो एटम हाइड्रोजन में तो डिफरेंट होते हैं, बट दैट इज विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स। कि जो हाइड्रोजन एटम है जब मैं उसका जवाब दिया था तो आप मोबाइल पे थे। अच्छा चले, जो कोई भी सिस्टम है ना, सो दिस एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मुझे पता है काफी लोग आप में से कंफ्यूज भी होंगे। When you have a whole system, for example, एक molecule है, there are a lot of different types of energy levels that are at play. जो सबसे ज़्यादा energy gap वाले हैं ना, जिनको आप जाने चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा energy सप्लाई करनी पड़ती है, वो होती है उन particles की जो न्यूक्लियस के अंदर है। अगर आप न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल शिफ्ट करना चाहते हैं, you have to work in X-rays and gamma rays. You have to supply very high energy gaps. ठीक है, हमने ये इसमें देखा था जब हम एक एग्जांपल कर रहे थे वन डायमेंशनल वेल, उससे जो कम डिफरेंस वाले एनर्जी लेवल्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, अ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब उससे छोटे एनर्जी लेवल्स हैं जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं, जो डिफरेंट बॉन्ड्स हैं मोलेकुलर बॉन्ड्स, उनका एनर्जी लेवल, अब देखें ये 10⁻⁻20 जूल है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना बनता है? ये एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन टू लेवल्स ऑफ दिस ऑसिलेटर इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड की वाइब्रेशनल एनर्जी है दो लेवल के दरमियान। सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज रफली 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, हाँ मैं आपको वही बता दूंगा। जब आप और ये लेवल्स हैं कि जो बॉन्ड्स हैं, आप देखें जो एटम्स हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर, दे कैन ऑसिलेट स्लोली और दे कैन ऑसिलेट वेरी फास्ट, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उधर ही हैं, और दे कैन ऑसिलेट इवन फास्टर। अब ये जो डिफरेंट ऑसिलेशन एनर्जीज हैं, ये जो लेवल्स हैं, ये हम हार्मोनिक ऑसिलेटर से निकालते हैं, एंड दे यूजुअली कॉरेस्पॉन्ड्स टू गैप्स ऑफ 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर वेवलेंथ कंप्यूट करें तो ये 2-3 माइक्रोमीटर आती है, व्हिच इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। इससे भी आगे एनर्जी लेवल्स हैं। द मॉलिक्यूल्स कैन रोटेट, एंड वी विल सी आफ्टर फ्यू वीक्स, हम उनको स्टडी करेंगे कि उनके भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, एंड दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विद द सेम मॉलिक्यूल। आज हम जो देखते हैं, these are associated with the vibration inside the molecules. Vibrational energies के gaps हैं, ये डेल्टा ई गैप है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो ½ h का ओमेगा है, 3/2 h का ओमेगा है, 5/h का ओमेगा एंड सो ऑन। इन रफली इस ऑर्डर से वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब देखें, अब अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी की, तो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज, आपने ये पढ़ा होगा उसमें
आइडियल गैस लॉ में एवरेज थर्मल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की, जो मॉलिक्यूल यूं गैस के अंदर जिगल कर रहे हैं, देयर गोइंग हियर और हियर, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इट्स प्रोपोर्शनल टू हाफ kBT। तो अगर मैं निकालना चाहूं कि कौन सा टेम्परेचर है जिस पे ये जो थर्मल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इतनी ही हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज हाफ, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट व्हिच इज 1.38 10 power minus 23 joules per Kelvin। एक ओके, सो अगर आप टेम्परेचर 4200 केल्विन का रखें तो जो मॉलिक्यूल की एवरेज थर्मल एनर्जी है वो इसके इक्वल आती है, जो कि वाइब्रेशन लेवल के दरमियान में डिफरेंस है। इसका मतलब है कि जब तक टेम्परेचर आपका 4200 केल्विन से कम है, जो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, दे आर गोइंग अराउंड एंड दे आर ऑफ कोर्स बाउंसिंग विद ईच अदर। तो जब तक ये एनर्जी से कम है, जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, क्या ये एक दूसरे की वाइब्रेशनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, ये सब, ये जो है ये सब में सेम हो, जो वाइब्रेशन की वजह से होती है, बिकॉज व्हेन समथिंग इज मूविंग इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी। देखिए, एक है एनर्जी लेवल, एक है डिफरेंस बिटवीन दी एनर्जी लेवल्स। बॉन्ड में जो वाइब्रेशन एनर्जी है यहाँ पे मिनिमम इतनी है, फर्स्ट करें बॉन्ड एटम जो है यूं मूव कर रहे हैं, आप किसी तरह से एनर्जी सप्लाई करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग मोर रैपिडली। अब इनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ना, द नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी इज दिस। अगर और एनर्जी ज्यादा देंगे दे विल स्टार्ट मूविंग मोर वायलेंटली, सो ये एनर्जी होगी। और इन तमाम लेवल्स के दरमियान में जो डिफरेंस है इट इज दिस। सो इसका मतलब है अगर आपने लेवल चेंज करना है तो इतनी एनर्जी आपने सप्लाई करनी है। अब मैं ये कंप्यूट कर रहा हूँ कि क्या अगर जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं थर्मल मोशन की वजह से, टेम्परेचर क्या है, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, अगर तो उनकी एनर्जी इतने के बराबर है, देन कुलियन के अंदर क्या हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल इधर से कोलाइड करता है और सारी एनर्जी दे देता है इसकी वाइब्रेशन की शक्ल में। तो एनर्जी किधर जाएगी? एनर्जी जो है वो यूज हो जाएगी, बजाय काइनेटिक एनर्जी के ये यूज हो जाएगी इसकी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ाने के, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसलेशनल एनर्जी। और अगर टेम्परेचर आप इतना ज्यादा कर दें हाइड्रोजन गैस का, तब जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², उसकी वैल्यू हो जाती है उतनी ही जितनी के जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स की वाइब्रेशनल एनर्जी के लेवल से होते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप इसको जरा टेम्परेचर की वजह से आप जब फर्ज करेंगे 4200 केल्विन है, यहाँ पे ये 3000 है समथिंग, तो इस टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट देते हैं तो जितनी भी हीट देंगे इट विल बी यूज्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर। सो फॉर ऑल दीज टेम्परेचर्स द हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट, कि जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, वो सारी की सारी यूज हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इतनी सफिशिएंट है ही नहीं कि वो बजाय मॉलिक्यूल्स को मूव करने के जो उनकी वाइब्रेशंस हैं उनको कम ज्यादा कर सके। लेकिन जो ही आप 4200 केल्विन पे पहुंचेंगे, इस टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे तो there is a very high possibility that heat goes somewhat into raising the temperature and some of it goes to raising the vibrational energies of the individual molecules. तो जो vibrational energies है ना, वो अगर आप थर्मोमीटर किसी गैस पे रखें ना, तो it doesn't read the vibrational energies of the molecules. The temperature is only what is the translational motion of the molecules, not their internal energies. नहीं, सिर्फ क्यों? जब एनर्जी दे रहे हैं तो इट्स पॉसिबल कि सम ऑफ द एनर्जी गोज टू मेकिंग इट मूव एंड सम ऑफ द एनर्जी
goes to making its vibration change. So इस केस में you need this one 4200 Kelvin. हाँ, state change करने से क्या बात है? That is something else that has to do with the transitional kinetic energy. So इसीलिए if you see its graph of the heat capacity, it has a jump here because after this you have to supply more energy to change its temperature by the same amount as you were doing here. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, all of the energy was being converted into translational energy. अब जब आपका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, तो जो भी आप एनर्जी देते हैं, एक पार्ट उसका इस्तेमाल हो जाता है उसका लेवल बढ़ाने में, और एक पार्ट जो है वो इस्तेमाल होता है उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. So ये जो टॉपिक है molecular structure वाला and its interaction with light and how we can use actual spectrum to identify if it is HCl या ये HO है या ये carbon monoxide है या carbon dioxide है. We are going to study it in detail after about 4 weeks. Today is just an introduction to this thing. So let me show you a little video that simulates this is the heat capacity. So actually जो वीडियो दिखाने का मकसद है, it's not going to help us too much here. ये 1950 में किसी ने बनाई थी, 1950s में, and you can see कि how do people have been using ingenuine techniques to show different concepts to students. बिल्कुल बिल्कुल, it's too little. But it's still smaller than the electrostatic and from gravitational force. जितना भी हो जाए, still क्योंकि there is a capital G which is 10 power minus 11 versus Coulomb constant K which is 10 power 9. So there is a difference of so this is a video from 1950s where a person is trying to show people why different molecules are almost the same as a spring mass system and why the number of atoms affect the what he called number of modes. Mode इसलिए कि वैसे तो हम एक स्प्रिंग के साथ एक K अटैच करते हैं. जो कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें 3 एटम्स हैं. So there are 3 different types of motions that are vibrations that are possible, and each type can simply be modeled by another spring constant K. So you have one possibility with spring constant K1, then K2, and similarly K3 and so on. Also have natural frequencies of vibration and can understand how light waves interact with them. Then we can see why a molecule will absorb infrared radiation only at certain frequencies. If the frequency of the light wave is the same as the natural frequency of vibration of the molecule, then there will be synchronization. The molecule will absorb energy from the light wave, and the molecule will vibrate more and more vigorously. Now, the way in which the light wave lays hands on the molecule has to do with the fact that the light wave is accompanied by an oscillating electrical field, while the molecule has different electrical charges on its different atoms. The left to right electrical field will push the positive atoms a little to the right, negative atoms a little to the left, and the right to left electrical field will do just the reverse. We can reproduce this condition by using an electrical generator to charge 2 condenser plates. With one charged positively and the other negatively, we can switch the charges back and forth and simulate the oscillating electrical effect of a light wave. To model the hydrogen chloride molecule, we can use 2 lightweight spheres connected by a spring.
These, of course, represent one hydrogen atom and one chlorine atom, held together by a bond. The spring rather accurately represents the bond. We have put a positive charge on the hydrogen and a negative charge on the chlorine. With this motor, we can switch the charge on the condenser plates back and forth, and we can observe the effect of the oscillating electrical field on our model of a molecule. We start with the system at rest and slowly increase the frequency of the oscillating electrical field so that in effect we scan the spectrum of different frequencies. At first, there is no interaction between the field and the two charged spheres, but when we reach a certain frequency, which corresponds with the characteristic frequency of our mechanical model, we see that the model begins to vibrate. So these two plates on the sides, they have an oscillating electric field. So one is negative, positive, then it switches back and forth rapidly. And the spheres are negatively and positively charged, so they feel a force. So here is the resonance. Its vibrational energy is derived from the oscillating electrical field. We'll slow this down a moment to compare it with a molecule interacting with the oscillating electrical field of a light wave. They will interact strongly when the frequency of the light wave is the same as the natural frequency of the molecule. But if we increase the frequency still more so that we exceed the characteristic frequency of the system, we find that again, there is no interaction. The energy of the wave is not absorbed. Because of frictional losses, the model quickly comes to rest. In the case of a real molecule, its energy wouldn't change. Now we've seen how a diatomic molecule produces its typical infrared vibrational spectrum. Let's go on and consider what happens in the case of polyatomic molecules. We can learn something about their vibrations by the use of a model of the carbon dioxide molecule. The center sphere represents the carbon atom, and the oxygen atoms are on each side. These are all connected in a line by bonds, which we've again represented by springs. Let's see how this model of a carbon dioxide molecule vibrates in its own particular way, just what sort of natural frequencies it has. We activate the model by using a motor-driven eccentric, which is coupled to the molecule by a very loose spring. Of course, if this were a real molecule, it would be pushed on by the oscillating electrical field of the light wave, just as we saw in the case of the HCl molecule. As we attempt to excite vibration very slowly at first, you can see how the molecule flops around rather loosely, but doesn't really fall into any organized, repeating pattern of vibration. When we slowly increase the frequency, we reach a point where the vibration of the molecule falls into a nice characteristic pattern called a normal mode. The molecule has reached one of its natural frequencies of vibration. At this particular frequency, it can vibrate in the normal mode you see here, with the molecule moving its atoms perpendicular to the bonds or springs, with the carbon atom moving up at the same time the oxygen atoms move down. Now, as we turn up the frequency, we once more leave the regular pattern of a normal mode, and the molecule falls into wild, chaotic motion with no regular pattern to it. As we increase speed, we reach another normal frequency, where the atoms begin again to execute a smooth, characteristic vibrational pattern. We note that at this frequency, the molecule has its atoms moving along the line of the bonds in a nice symmetrical fashion, with the two oxygen atoms breathing in and out, and the carbon atom staying fairly still. By increasing the frequency again, we get away from synchronization
and the molecule again shows only chaotic motion. As we approach the third normal frequency, we see that the molecule is moving in an unsymmetrical fashion, with the carbon moving one way and the two oxygens the other. We would find the same three characteristic types of motion in the actual carbon dioxide molecule. It would move like this at a frequency of 7.05 times 10 to the 13th cycles per second, the highest natural frequency of vibration. Like this at 4.16 times 10 to the 13th cycles per second. And like this at 2.00 times 10 to the 13th cycles per second, the lowest natural frequency. These three frequencies are all the components we would find in any vibrations of carbon dioxide. And any motions can be analyzed in terms of these three characteristic patterns. So you are proving the research that has been done again and again that this motion and the this motion. span of concentration of people on YouTube is about 5 to 6 minutes. So you can't watch a video more than this if you're an average person. That's why about 70 to 80% videos on YouTube, all of them, they are in between 4 to 6 minutes. Because that's all that